Good morning, students. Welcome to YouTube live classes. I am Dr. PRUSTY, Assistant Professor of Commerce, RAVENSHAW Higher Secondary School, CUTTAK. In the last class, we discussed about the yield and dividend. Dividend, that is, you are calculated on stock price, and yield is, that is the actual rate of return. That means on the investment amount, what we get the income or the rate of income. So yield, that is to be calculated, that is the rate of your dividend divided by the investment or the market price or cash price of the stock into 100. And the relation we have already discussed, that is, if stock value is equal to cash value, then we get the yield is equal to your dividend. If stock value is more than your cash value, then yield is more than your stock value, that is yield more than the dividend, and the vice versa. So today we will start with that problem, that is based on the market price. How to find out the market price or cash value of the stock? Find the market price of a 5% stock when an investment of rupees 20,000 produces an income rupees 800. तमाने आमे जदि 20,000 टंका आमे इन्वेस्टमेंट करूचे सेथिरे आमे इनकम आसी 800 टंका. तेनु आमे जो 5% स्टॉक अछि तमाने 5 टंका इनकम आसीबो. तो इन दिस केस देयर इज नो ब्रोकरेज इज गिवन. तमाने 5 टंका जेतळ आमे इनकम करिबा ताले केते इन्वेस्टमेंट करथिबा ताहा हेउची स्टॉक रो कैश वैल्यू, or that is the market price of that stock. So how to solve this problem? So when income is rupees 800, then investment is equal to 20,000 rupees. 20,000. So at the time of 1, that is equal to 20,000 divided by 800. Then at the time of 5, dividend rate is 5. Then at the time of 5, we get 20,000 into, that is 800 divided into 5. So we get this is your 25, and this value is equal to 125. तेणु स्टॉक रो कैश वैल्यू होची 125 टंका. जदि हमें 125 टंका रे स्टॉक टिको इन्वेस्टमेंट करिवा आ तार रेट ऑफ डिविडेंड होची 5%, ताले हमें 20,000 हमें जदि इन्वेस्टमेंट करले हमें तार इनकम पाइबा 800 टंका. तब देखा क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द 10% स्टॉक इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीस 15,000 produces, that is your annual income of rupees 1,800, and in this case brokerage is given. Now how to find out this? That is your solve the problem. So in this case also the same procedure we have to follow. We will get income of rupees 1,800 when he invests rupees your 15,000 at that time 1 and at the time of 10 rupees 10. But 10% dividend rate अछि ताले तार इनकम होची 10, ताले तार इन्वेस्टमेंट प्राइस केते, तमाने गोटे स्टॉक रो कैश वैल्यू केते. देखो when he gets income of rupees 1,800, income rupees 1,800, then investment is equal to your 15,000 rupees 15,000. So at the time of 1, that is equal to 15,000 divided by 1,800. Then at the time of 10, we get this value 15,000 divided by 1,800 into 10. So that is equal to 1,500 by 18. So
or that is equal to 83 1 by 3. କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କହିଛି ଯେ ତାର ବ୍ରୋକରେଜ ହେଉଛି 1/3 ତେଣୁ ବ୍ରୋକରେଜକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରୋକରେଜଟା ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିଲେ କଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରୋକରେଜଟା ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ତାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ପାଇଯିବା ତାମାନେ 83 1/3 ମାଇନସ୍ ବ୍ରୋକରେଜ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ 1/3 ତାହେଲେ ତୁମର ଷ୍ଟକ୍ର କ୍ୟାଶ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 83 ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 83 1/3 minus 1/3 that is equal to 83. So this is the cash value or market price of the stock. तापर देखा आउट एटी अलग टाइप रो क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 3 रे by investing 9% stock a person gets 12% on his money. Find the market price of the 9% stock. जदि से किछि इन्वेस्टमेंट करूची 9% स्टॉक रे से इनकम पाउची इन्वेस्टमेंट रो 12% ताहले से 9% स्टॉक रो मार्केट वैल्यू केते हमें कोन करबा हमें नै जीवा लेट ही इन्वेस्ट 100 रुपीस let he invest rupees 100 ताल से केते इनकम पाउची ना 12% माने से 100 टंकार 12% पाइबो सो his income will be 12% of rupees 100 so that is your 12 rupees तेनु जदि से 12 टंका पाउची 100 टंका रे 9% डिविडेंड रे केते पाइबो 9 पाइबो सो when he gets income 12 then investment is equal to 100 at the time of 1 that is 100 by 12 at the time of 9 so that is 100 by 12 into 9 so that is equal to 75 rupees ताहले तुमर से स्टॉक रो मार्केट वैल्यू होची 75 rupees तापर देखा क्वेश्चन नंबर 4 if a person invests 15,000 in 12% stock at rupees 120 instead of 10.5% stock his income would be rupees 100 more find the price of 10.5% stock इति 10.5% stock रो वैल्यू देइनी मार्केट वैल्यू देइनी आमे ताको बाहर करिया पड़िबो किंतु से गोटे कहिछि आउट स्टॉक रो वैल्यू कहिछि जे जदि से 15,000 टका इन्वेस्टमेंट करूछि 12% स्टॉक रे केते टका गोटे स्टॉक को ना कैश वैल्यू तार होछि और मार्केट प्राइस होछि 120 टका सेथिरे से जेति की इनकम पाइबो ताले तुमर जदि से 10.5% स्टॉक रे जदि से करथान ताले 100 टका अधिक पाइथांदा ताले तुमर 10.5% स्टॉक रो वैल्यू केते तो आमे कोन करबा ना 15,000 स्टॉक जदि हमरा से 120 टका इन्वेस्टमेंट करूची ताले केते टका पाउची 12 टका पाउची टंका करे केते पाइबो 15,000 टंका रे केते इन्वेस्टमेंट पाइबो देन जदि से 10.5 सेति टंका को जदि से 10.5% स्टॉक रे जदि से इन्वेस्टमेंट करथांदा ताहले हमें 100 टंका अधिक पाइथांदा ताहले पूर्वर जो इनकम थिबा सेतिरे हम कोन करबा ना 100 ऐड कर दबा सेही इनकम इन्वेस्टमेंट करिवो केते रे ना से 15,000 रे ताहले 10.5% रो स्टॉक वैल्यू बा मार्केट वैल्यू तुमरो आमे पाइ जिबा देखो केमती होची सेतिरे देखो 120 टका बाय इन्वेस्टिंग so by investing 120 he will get an income of that is 12 that is 12% so that is 12 at the time of 1 that is 12 by 120 or this is equal to 1 by 10 at the time of 15,000 so this should be that is 1 by 10 into 15,000
So we get that is 1500. तापर से कहूची instead if he invest in 10.5% stock his income would be rupees 100 more. तामाने जो 1500 टंका जो 12% स्टॉक रु पाउतला से आउ 100 टंका अधिक पाइबो ताले इनकम हमर केते हबो ना 1600 टंका. सो इनकम फ्रॉम 10.5% stock is equal to 1600. तेणु ये टंका केते टंका रे पाइबो ना 15000 टंका रे पाइबो. सो when it is 1600 income, then invest amount how much? That is your 15,000. So that is your at the time of 1 and at the time of 10.5 or 10 half. So when income is 1600, so this is your income is equal to 1600, then investment is equal to 15,000. At the time of 1, 15,000 by 1600, or we get that is your 150 by 16. Then at the time of 10 half, so 10 half means your 21 by 2. So at the time of 21 by 2, so 150 by 16 into 21 by 2. So we get this is your 75 into 21 by 16. So you can get the value of that your stock. Then in the next question it is given, question number 5. A person invested equal sum, it is sum देइनी खाली कहि देला equal sum in 5% stock at 95 and 6% stock at certain price. ए प्राइस टाको हमको बाहर करिया पड़िबो. से समान अमाउंट रो टंका से गोटे 5% स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करछि जोटा कि 95 टका देई देछि. आउ गोटे स्टॉक रे से इन्वेस्टमेंट जदी करिवो 6% स्टॉक रे किंतु केते टका रे इन्वेस्टमेंट करछि गोटे स्टॉक को जणा नाही, हम तो बाहर करिया पड़िबो. सेही इक्वल सम त माने I सपोज नबा x टका. इफ ही गेट्स द इक्वल इनकम किंतु दीटांकर से इक्वल इनकम पाउछि ताहले हमें देखिबा जे जो सेकंड स्टॉक बा 6% स्टॉक रो तुमरो मार्केट वैल्यू केते देखो. let he invest x, then by investing 95 his income is equal to, that is in the 5% stock, so that is equal to 5. At the time of 1, that is 5 by 95 or that is 1 by 19. At the time of x, so his income should be x by 19. So x into 1 by 19 or 1 by 19 into x, so you get that is x by 19. Then secondary भी a income पाइबो, x by 19 secondary income पाइबो. कितना investment करिवो? So same amount x. So when you get income x by 19, then his investment is your x. Then at the time of 1, so that should be x by x 19. So that is equal to 19 because x into 19 by x, that x is to be cancelled. So you get that is your 19. ताहले 6% जिते बेले स्टॉक थिबो ताहले तार इनकम केते हबो ना 6 टंका बेले, so 6 into 19 you get that is 114. ताहले 6% स्टॉक रो तुमरो कैश वैल्यू और मार्केट प्राइस, so that should be equal to rupees 114. So this is about, these are some problems that is based on how to find out the market price or cash value of the stock. Then comes to the next slide. Investment of a given capital in two different stock. It is आसिला जे मु गोटे मो पाखरे किछि गोटे टंका थिला, सेही टंका को मु कोन करूछि ना दीटा स्टॉक रे मु इन्वेस्टमेंट करूछि किछि पार्टली. सपोज मोर 10,000 थिला, मु
8% स्टॉक सपोज से 7,000 टका इन्वेस्टमेंट कली आउ गोटे स्टॉक जो परचेस कली सपोज 10% स्टॉक बाकी तुम जदि 6,000 कली से 4,000 कर तेणु आमको से बर्तमान से कहूँ से 12,000 टका टोटाल ता पाखे थिला से 12,000 टका रु किछि कोन करछि ना 3% स्टॉक एट 75 75 टका 3% तुम स्टॉक से इन्वेस्टमेंट कला आउ किछि अमाउंट अछि जहा कि 4% स्टॉक एट 96 से 96 रुपीज रे 4% स्टॉक रे भी इन्वेस्टमेंट कला कि केते केते टका इन्वेस्टमेंट कला जानि किंतु टोटल टका होछि 12,000 टका if his in total income is 487.50 find his investment in each stock तेणु आम कौन करवा ना जदि आम 3% स्टॉक को से जो इन्वेस्टमेंट कला 75 टंका लेट हिज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्स सपोज से एक्स टंका इन्वेस्टमेंट कला 3% स्टॉक रे 75 टंका ताहले हमर केते इनकम हला हम देखिबा तापर सेमती बाकी कौन हला ना 12,000 माइनस एक्स सेही टंकाटारे से इन्वेस्टमेंट करिछि तुमरो 4% स्टॉक एट 96 दीटा को इनकम मिसे देला को हेला हमरो 487.50 और 487 हाफ ताहले से कोथरु केते टंका इन्वेस्टमेंट करतला हमकु बाहर करिया पड़िबो सो फर्स्ट वन इज we take that is your let he invest x in that is first one is 3% stock at 75 3% stock at 75 पहले by investing 75 by investing 75 is income किते इनकम 3% अछि तेनो इनकम पाइबो से 3 टंका पाइबो एक बेले केते पाइबो ना 3/75 और 1/25 टंका ताले x बेले केते पाइबो ना दैट इज योर x/25 तेनो से प्रथम स्टॉक जदी x टंका इन्वेस्टमेंट करि थाए ताले से इनकम पाइबो केते ना x/25 तापर हम देखिबा सेकंड रे केते इन्वेस्टमेंट करिवो ना टोटल जेहेतु 12,000 प्रथम टारे x कला त सेकंड रे केते बड 12,000 माइनस x he invested 12,000 minus x in that is 4% stock at 96 ताले कोन हो सेमती by investing 96 you will get an income of 4 so by investing 96 is income that is 4 at the time of 1 that is your 4 by 96 or that is 1 by 24 and at the time of 12,000 minus x that is equal to 12,000 minus x by 24 तेनु ये होची तुमरा 4% स्टॉक रो इनकम प्रथमटी x by 25 होची तुमरा 3% रो इनकम ताले एई दुईटांक इनकम आमे मिसेबा गोटे इक्वेशन आसीयो बर्तमान एई दुईटांकर टोटल होची तुमरा 487 हाफ ताले x रो वैल्यू बाहर करबा सो टोटल इनकम is equal to 487 half. So this implies that x by 25 plus 12,000 minus x by 24 is equal to so 975 by 2. That is 975 by 2. Now we have to solve the equation. So if we take LCM is equal to 600, then this is your 24x, this is your 25 minus 25x is equal to 975 by 2. This implies that I mean cancel kar daba, this is your 300. So minus x. So this is your 3 lakh minus x is equal to 975 into 300. तापरे
तुम्हें x रो वैल्यू तुम्हें ताको सॉल्व कर दबा हमें. So that is your 25 2600, so 24x plus that is your 24 25 minus 3 minus x. So this amount should be, you deduct it from 390. So this implies that 3 lakhs minus that is your is equal to x. So x value is equal to, we get, so that this implies that x is equal to 7,000, that is 500. So we get that in 3% stock he invests, that is your 7,500. तो माने 12,000 टका रु से 7,500 टका इन्वेस्टमेंट करछि कोथरे हमर 3% स्टॉक रे, आ बाकी 4,500 से इन्वेस्टमेंट करछि कोथरे ना, दैट इज एट द योर 4% स्टॉक. तेणु दी टांगर इनकम मिसला बेलू है तुम केते ना 487 हाफ. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेही बळी ए प्रॉब्लम सब सेही बळी एथरे कोन कहबे ना तुमर दी टांग माने तुमर तीनटा सिचुएशन आसी बळे बेले बेले कहबो एमती पार्टली इन्वेस्टमेंट करछि एठी हमर कोन देला ना दिस इज योर टोटल सम. आ गुटे केस रे दबो जे प्रथम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करथला 1% पार्टली रे सेथिरे जो इनकम आस्थिला सेकेंड रे से जो बाकी तक टंका रे इन्वेस्टमेंट करता तार इनकम समान हैला, तेणु हम इक्वल टू कर दबा. आउ बेले बेले आसीबो कोन ना मोर देन दी अदर स्टॉक, तार एतरे कोन करबा से अमाउंट दे जो केते अधिक हैला, तेणु फर्स्ट स्टॉक रो इनकम दैट इज माइनस सेकेंड रो इनकम इज इक्वल टू एतिकी. तेणु एई बळी विभिन्न वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम अछि. देखो क्वेश्चन नंबर 2 रे कोन कहूची ना हरीश इन्वेस्टेड एट 8,370 पार्टली in 3% stock at 96 and the balance in 4% stock at 120. If his income from each stock is same, जो कहते सेम ता माने सपोज से x इन्वेस्टमेंट कला 8,370 टंका मु हिंट्स दे दोची 8,370 टंका से कोन कला ना x टंका इन्वेस्टमेंट कला 3% स्टॉक एट 96. ताले हम कोन होबो ना बाय इन्वेस्टिंग 96 he gets income of ₹3 at the time of 1 and at the time of x. मार कर दे तार इनकम हला बैलेंस ता माने 8,370 माइनस x इति टंका से इन्वेस्टमेंट करिवो 4% स्टॉक एट 120. 120 टंका इन्वेस्टमेंट करि 4 टंका पाइला एक बेलू केते पाइबो एक तो 30 पाइबो. वर्तमान बाकी केते इन्वेस्टमेंट करछि 8,370 माइनस x ताले कोन हो ना 8,370 माइनस x बाय 30. एइति से कहला दुईटांकर इनकम समान, तेणु प्रथम जता इनकम आसला सेकेंड रो इनकम समान इज इक्वल टू कर दबा, तापर x रो वैल्यू बाहर कर दबा, आंसर आसी गला. तापर बाकी तक 8,370 माइनस कर देला से सेति 4% स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करथिला. क्वेश्चन नंबर 3 रे देखो रमेश इन्वेस्टेड 10,000 पार्टली इन 5% स्टॉक एट 75 and the balance in 8% stock at 80. How much he invested in his stock so that income from 8% stock will be more than 500, the more by 500 than the 5% stock. तेणु बर्तमान आम कौन करिया सेही प्रोसेस करिया x इन्वेस्टमेंट करथला 5% स्टॉक रे, तेणु बाय इन्वेस्टिंग 75 you will get an income of 5. 1 बेले 5 by 75 or 1 by 15 at the time of x that is equal to x by 15. सेकेंड रे कहूची जैसे 8% स्टॉक रे 80 टंका रे इन्वेस्टमेंट करथला, सो बाय इन्वेस्टिंग 80 यू विल गेट एन इनकम ऑफ 8 एट द टाइम ऑफ 1 दैट इज योर 8 by 80 बार 1 by 10 केते करथला ना 10,000 माइनस x करथला, सो 10,000 माइनस x by 10. एटी कहला कोन ना से 8% स्टॉक रे जेतिकी से इनकम करूची 5% अपेक्षा 500 टंका अधिक करूची, तेणु 8% रो इनकम आम कैलकुलेशन कले माइनस 5% रो इनकम जो करथिले हम कैलकुलेशन करथिले माइनस करथिले इज इक्वल टू 500. इक्वेशन पढियो तापर x रो वैल्यू तुमे बाहर करिवो. अच्छा नेक्स्ट स्लाइड को आसा. वर्तमान आसिला तुमरो कम डिविडेंड एंड x डिविडेंड. So कम डिविडेंड एंड x डिविडेंड. कम डिविडेंड प्राइस कोटेशन कोन हमर जेतले परचेस सेल करा जाए
से दुई प्रकार प्राइस कोटेशन थाए गोटे हूँ कम डिविडेंड प्राइस कोटेशन एंड अनदर वन इज एक्स डिविडेंड प्राइस कोटेशन. इन द कम डिविडेंड प्राइस कोटेशन द एक्यूरेट डिविडेंड तुमर आड हो थाए. ये एक्यूरेट डिविडेंड टा कौन एटा प्रथम आम बुझा आमर कंपनी ऊपर निर्भर करे जो डिविडेंड डिक्लेयर करे आइदर वंस इन ए ईयर और ट्वाइस इन ए ईयर. तेणु जिते बड़े वंस इन ए ईयर हम सपोज दैट इज 30th जून और 31st डिसेंबर कि जिते बड़े सपोज दुई थर हुए सपोज दैट इज 30th जून एंड 31st डिसेंबर और 31st मार्च एंड 30th सेप्टेम्बर एमती कर किंतु एक्यूरेट डिविडेंड टा कोठू कैलकुलेशन करा जाए. एक्यूरेट डिविडेंड that is to be calculated on the period between the last date dividend declaration till the purchase or sale of the shares or debentures. हमर जो लास्ट हमर जदी सपोज वर्ष को थिला हमर वर्ष को जदी अछि हमें गोटे प्रथम गोटे एग्जांपल नबा तार डिविडेंड वंस इन ए ईयर. तेणु वंस इन ए ईयर माने सपोज ताको अच्छी 31 डिसेंबर रे माने गोटे कंपनी 31 डिसेंबर रे से प्रत्येक वर्ष 31 डिसेंबर रे डिविडेंड डिक्लेयर करिवो 31 डिसेंबर. ये लोक कोन करिछि तार जो शेयर टाको शेयर परचेस और सेल करिछि दैट इज ऑन 1st अप्रैल दैट इज 2000 सपोज 2020. तेणु आमको एक्यूरेट डिविडेंड बाहर करबा. सो दिस इज योर date of transaction or that is date of purchase and sale. यार पूर्व डेट कोटा हिथिबो यार पूर्व डेट तुमरो डिक्लेरेशन डिविडेंड होची 31 डिसेंबर 2019. ताहले हमर केते मास पीरियड टा केते मास होची ना 3 मास होची जनवरी फेब्रुआरी मार्च. तापरे हमर तार डिविडेंड बाहर करिवा आउ ये जो 3 मासर डिविडेंड होची तुमरो एक्यूरेट डिविडेंड. तेणु आमे जेतले तार कॉस्ट प्राइस पाइबा ताहले परचेस प्राइस माइनस योर एक्यूरेट डिविडेंड. आउ गोटे अछि तुमरो एक्स डिविडेंड. तेणु मन रख कम डिविडेंड ता तुमरो प्राइस कोटेशन रे इंक्लूड होई कि थाए किंतु एक्स डिविडेंड बा एक्स इंटरेस्ट केस रे तुमरो कोन होइताए सेटा एक्सक्लूड होई कि थाए सेटा मिसी कि न थाए. So in this case that is your cost price is equal to your purchase price. एतरे समान रहइबो कारण कोनोसे डिविडेंड एक्यूरेट डिविडेंड मिसिनी. तेनु आमे जदी दीटांकर रिलेशन देखिबा कम डिविडेंड प्राइस कोटेशन is equal to x डिविडेंड प्राइस कोटेशन प्लस एक्यूरेट डिविडेंड और एक्यूरेट इंटरेस्ट. जदी डिबेंचर केस हेइतबा ताको आमे कोन नबा एक्यूरेट इंटरेस्ट. जदी शेयर केस बा स्टॉक केस हेइतबा आमे नबा कोन एक्यूरेट डिविडेंड. तेने एई बळे हमर कैलकुलेशन हबो. आ गोटे जिंस कहूची सपोज हमर दीटा डेट अछि माने कोन ना गोटे अछि सपोज 30th जून एंड 31st डिसेंबर. हमर ए जो ट्रांजैक्शन टा हिची सपोज 1st अक्टोबर रहिची. आउ तार प्राइस कोटेशन टा होची कम डिविडेंड प्राइस कोटेशन. ताले कम डिविडेंड हमर जो प्राइस कोटेशन ने एक्यूरेट डिविडेंड केते कैलकुलेशन करिवा. तेनु जेतले कैलकुलेशन करिवा आमे देखिबा 1/10/2020 रा पूर्व डिक्लेरेशन डेट केबे पूर्वटा आसीबो कोउटा ना 30th जून आसीबो कारण जून परे तापर अक्टोबर तापर जाई कि डिसेंबर. तेनु जून परे जो अक्टोबर है केते मास है ना 3 मास है जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर. तेणु आम जिते 3 मासर डिविडेंड आम कैलकुलेशन करवा आम ताकू कहवा एक्यूरेट डिविडेंड. सो दैट डिविडेंड ऑफ दैट 3 months. Now in the next slide that is you find out some problems on this your com dividend price quotation and X dividend price quotation. The question number 1 are purchased
30,000 9% stock at rupees 102 on 1st April 2021 quoted as कम dividend price quotation. इटा अछि हमर कम dividend price quotation रो. Due date of the dividend is 31st December. तुमर 31st December होछि तार ड्यू डेट बा तुमर जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट. फाइंड द एक्यूरेट डिविडेंड एंड कॉस्ट प्राइस. हमको एक्यूरेट डिविडेंड प्रथम बाहर करबा. अच्छा वर्तमान मते कह हम केमति करबा बाहर करबा एक्यूरेट डिविडेंड. मु कहिछि एक्यूरेट डिविडेंड दैट इज द पीरियड बिटवीन द लास्ट डेट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेरेशन and purchase or sale of your stock. So we find out the last or previous date is 31st December. आउ वर्तमान तुम ट्रांजैक्शन डेट केबे होची और परचेस और सेल डेट केबे होची ना 1st April 2021. ना माने हमर 3 मास होची जनवरी फेब्रुआरी मार्च. तेणु हमर जो 3 मासर डिविडेंड होची ताहेले हमर एक्यूरेट डिविडेंड केते देखो हम कहिछि डिविडेंड ता का ऊपर कैलकुलेशन हबो ना स्टॉक प्राइस ऊपर कैलकुलेशन हबो. सो 30,000 into your 9% that is the dividend for whole year. So for rupees 100 the dividend is your 9. Then at the time of 1 that is 9 by 100 and at the time of that is your 30,000. So that is 30,000 is equal to 9 by 100 into 30,000. So that is your 2,700. Then ये होचे whole year रो डिविडेंड वर्षकर डिविडेंड किंतु एक्यूरेट डिविडेंड होचे हमर 3 मास रो मु कहिछि कोन पई ना डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट लास्ट होचे प्रीवियसली थिला डिसेंबर रे ये ट्रांजैक्शन हला 1st April रे तमने केते मास रहला 3 मास रहला जनवरी फेब्रुआरी मार्च. तेणु एक्यूरेट डिविडेंड होची 2700 टंका वर्षकर हमकु 3 मास रो कैलकुलेशन करिया पड़िबो और वी हैव टू मल्टीप्लाई 2,700 into 3 by 12. So we get that is your 225 into 3 that is your 675. 675 is the your accurate dividend. अच्छा तापर सेकंड बीट क्वेश्चन पचारछि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. तेनु कॉस्ट प्राइस ता केमति कैलकुलेशन करिया तार फार्मूला हम कहितले कॉस्ट प्राइस होछि तुमर कोन ना तुमर कैश वैल्यू माइनस एक्यूरेट डिविडेंड. तेनु प्रथम बाहर करिया कैश वैल्यू केते. तेनु कैश वैल्यू केते ना 100 टंकार स्टॉक रे से 102 टंका इन्वेस्टमेंट करूची ताले 30,000 स्टॉक रे केते से रिसीव करिवो बाहर करिवा. सो व्हेन stock value is 100 then cash value is 102. At the time of 1 that is 102 by 100. At the time of 30,000 102 by 30,000 that is 100 into 30,000. So cancel he gala. So that is 30,600. So this is your cash value 30,600. किंतु आमको बाहर को पड़ियो कॉस्ट प्राइस. तेणु कॉस्ट प्राइस रे फार्मूला होची कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कैश वैल्यू माइनस एक्यूरेट डिविडेंड. हमर कैश वैल्यू असला केते 30,600 माइनस हमर केते आछि 675. So that is 29,925. So that is 925. So this is the your cost price of the stock in case of accurate dividend. तेणु accurate dividend जेतेबेले तुमरो सॉल्व करिवो सेतेबेले देखिवो period of last date of the declaration of dividend आउ तुमरो को डेट रे ट्रांजैक्शन हिचे सेही पीरियड ता भितरे हमें देखिबा. अच्छा तापर देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आसा.
In question number 2, X purchased 20,000 12% debentures at 98x interest. ये होची x interest on 1st March 2021. If interest dates are 30th June and 31st December, find the cost price and com interest price. तेणु ये केस रे कौन हम देख प्रथम आम कॉस्ट प्राइस बाहर करवा मुझे गोटे कही प्रीवियस स्लाइड रे कौन कही कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परचेस प्राइस. सो जदि से 100 टंकार डिबेंचर को 98 रुपीस रे किनिला ताहले 20,000 र डिबेंचर को केते टंकार किनिबो ताको बाहर करवा. सो when the stock value by tomorrow dividend that is the face value is 100, then 98 is the cash value at the time of 1 and at the time of 20,000. So that you get that is 19,600. तेणु purchase price जा cost price it is share. तेणु हमर आसला 19,600. तापर कहूची कोन ना what is the com interest price? the com interest price रे कोन हबो ना x interest price plus accurate dividend. एठी जेतु इंटरेस्ट अछि accurate interest तेणु आमको accurate interest calculation करिया को हेले कोन हबो ना आमको पीरियड calculation करिया पड़िबो. देखो दुईटा डेट अछि एठी गोटे होची 30th जून आ गोटे होची 31st सितंबर. तेणु 30th जून आ 30th सितंबर हमर किंतु डेट ट्रांजैक्शन केते ना 1st मार्च ता माने प्रीवियस डेट ता निश्चित भाबे 30th 1st डिसेंबर हेतिबो. तार केते मास रहला 2 मास रहला. तेणु आमको कैलकुलेशन करि पड़ियो 2 मासर हमर केते टंका इंटरेस्ट हो बा तोर प्रथम वर्ष कर बार करिया तापर 2 मासर कैलकुलेशन करिया. ताल देखो हमर डिबेंचर रो वैल्यू होची बा तोर स्टॉक वैल्यू होची तोर 20,000 आ केते परसेंट डिबेंचर 12% डिबेंचर. सो 20,000 into 12 by 100 is equal to your 2,400. So ये होची 2,400 होची टोटल इंटरेस्ट किंतु हमर पीरियड ऑफ एक्यूरेट डिविडेंड केते ना हमर 2 मास कैलकुलेशन करले जनवरी और फेब्रुआरी कोन लास्ट डेट चला 31 डिसेंबर वर्तमान ट्रांजैक्शन होची 1 मार्च ताले जनवरी फेब्रुआरी 2 मास रहला. तेणु हमें 2 मास कैलकुलेशन करबा. सो 2,400 into 2 by 12 is equal to 400 rupees. So this is your com interest price. Com interest price 400. ताले वर्तमान देखो से कहूची what is the com interest price? So com interest price रो फॉर्मूला मु कहितली that is your x interest price plus accrued interest. तेणु हमर हेतला केते 19,600 हेतला 19,600 plus this 400 we get that is 20,000. So com interest price is equal to 20,000. तापर आसीबा लास्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3. Z bought 6,000 shares of rupees 10 each at rupees 12. The company declare a dividend of 8%. Find its investment, dividend and actual rate of earning. हमके तीनटा जिंस बाहर करिया पड़िबो. से 6,000 शेयर टा परचेस करछि गोटी को 10 टंका किंतु 12 टंका रे परचेस करछि ताले कोन होला ना इश्यूड एट प्रीमियम. म कहितले जेतले स्टॉक वैल्यू टू जेतले कैश वैल्यू टा अधिक होई जबो हमें कहबा ताको इश्यूड एट प्रीमियम. ताले से केते टका इन्वेस्टमेंट करथिबो ना जदी से 100 टंकार स्टॉक को बा 10 टंकार स्टॉक को 12 टंकार किनिला बा 10 टंकार शेयर को से 12 टंकार किनिला ताले 6,000 शेयर कोन हबो ना 6,000 into 12 ता माने गोटे शेयर so investment price or investment value of one share is equal to 12. So that is for 6,000 shares, that is 6,000 into 12, that is 72,000. तामाने से एती टका इन्वेस्टमेंट करछि 72,000.
तापर कहला कोन ना व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड केते अब कहितली डिविडेंड का ऊपर कैलकुलेशन करबा ना दैट इज ऑन द स्टॉक वैल्यू ताले 6000 स्टॉक रो वैल्यू केते स्टॉक वैल्यू केते गोटिए जदि शेयर रो स्टॉक वैल्यू होची 10 टंका ताले 6000 रो केते हबो 60000 हबो तापर तार डिविडेंड रेट केते अछि 8% अछि सो 60000 into 8/100 तेणु स्टॉक वैल्यू हम कौन यहाँ हूँ तुम इन्वेस्टमेंट वैल्यू अच्छा स्टॉक वैल्यू तुम आसो 6000 टा शेयर गुणन 10 टंका लिखाए कारण स्टॉक वैल्यू ऑफ वन दैट शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज सो वी गेट दैट इज इक्वल टू 60000 अच्छा डिविडेंड कौन हम ना डिविडेंड रेट इज इक्वल टू 8% सो डिविडेंड is equal to 60,000 into 8/100 is equal to 4,800 तेणु डिविडेंड अमाउंट आसी 4,800 तापर थर्ड थिंग कहूची फाइंड द एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग दैट मींस योर टोटल यील्ड अच्छा यार फार्मूला कौन ना टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 so total dividend divided by total investment into 100 so that is 4,800 by 72,000 into 100 so that is the actual rate of earning तेणु ये भली भाबे आमे सब प्रॉब्लम सॉल्व करिया स्टॉक एंड शेयर तेणु आमे जो स्टॉक एंड शेयर सब प्रॉब्लम सॉल्व कले हम विभिन्न हेड रे सॉल्व करछे विभिन्न हेड रे सपोज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस तुम्हारा कॉस्ट प्राइस देइथिबा ताले सेल्स प्राइस केमति बाहर करबा सेल्स प्राइस देइथिबा केमति तामे कॉस्ट प्राइस से बाहर करबा तापर सेमति नॉमिनल वैल्यू और स्टॉक वैल्यू हमें केमति कैलकुलेशन करबा तापर बाइंग एंड सेलिंग रे केमति हमें लॉस और गेन बाहर करबा गोटे स्टॉक थिला हमें ताकू बिक्री हम सेते जहा इनकम आस्तला हमें बिक्री कर देई कि जति टंका हमर मनी रियलाइज होला सेल्स प्रोसीड होला आमे कौन कले ना से आउ गोटे स्टॉक किनिदेले तेणु से जो स्टॉक किनले आमर केते गेन और लॉस होला इनकम नुहे केते गेन और लॉस होला माने मु सपोज 15,000 टंकार स्टॉक मोर थिला मु बिक्री कर देली ताकू गोटे स्टॉक 98 टंकार जेती टंका मु मनी रियलाइज कली सेटा आउ गोटे स्टॉक रे मु परचेस बा इन्वेस्टमेंट कर देली तेणु मु जो सेल कले इन्वेस्टमेंट कली ता भीतर गेन और लॉस सेटा हम बाहर कर प्रॉब्लम सॉल्व कले तापर हम गोटे प्रॉब्लम सॉल्व कले डिविडेंड आउ यील्ड ऊपर तो हम कहितले डिविडेंड हम स्टॉक वैल्यू ऊपर हम जो कैलकुलेशन कले स्टॉक वैल्यू ऊपर हम कैलकुलेशन करबा सो दैट इज स्टॉक वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट बाय 100 आउ यील्ड होची तुम्हार कोन ना टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 और रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैश वैल्यू ऑफ द प्राइस और मार्केट वैल्यू ऑफ द प्राइस इनटू 100 जो केस रे लेबे हम यील्ड रेट पाई जबा ये जो यील्ड ऊपर बेस करिवो तुमर केते प्रकार गोटे क्वेश्चन कोन ना व्हिच वन इज द बेटर इन्वेस्टमेंट तेनु देखिबो दीटा को कंपेयर करिवो दी जण जाकर बा दुईटा को स्टॉक रो हमें बाहर कर दबा तुमर यील्ड रेट जहार यील्ड रेट अधिक से होची तुमर बेटर इन्वेस्टमेंट और कस्टमर शुड फॉलो दैट सेमती आउ गोटे टाइप रो पचारिवो 4-5टा देइथिवो से कहबो ताकू इनकम हिसाब रे बा अधिक इनकम हिसाब रे सजेई रख अरेंज कर से केस रे सेमती तुम यील्ड रेट बाहर कर दबो जार अधिक थिबो 1 नंबर तापर जार कम थिबो 2 नंबर 3 नंबर एमती कंटीन्यूअसली चलिबो तनो ये गला तुमरो यील्ड ऊपर हम ऑलरेडी हम सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर दैछे चेंज इन इनकम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन स्टॉक टू अनदर ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कले ता माने हमर केते गुडी स्टॉक थिला हमें कोन कले सेही स्टॉक टा को बिक्री करि के आउ गोटे स्टॉक परचेस कले वर्तमान हम चेंज इन इनकम देखिबा तेणु इथरे केते गुडी स्टेप अछि प्रथमे कैलकुलेशन कर दबा व्हाट इज द इनकम फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉक जोटा ओमर थिला एक्जिस्टिंग टा तापरे हमें ताको बिक्री करि के आउ गोटे स्टॉक किनिले प्रथमे हमें मनी बा सेल प्रोसीड्स बाहर करबा सेही सेल प्रोसीड्स इन्वेस्टमेंट करि के आउ गोटे स्टॉक किनला से सेकंड स्टॉक रो तापर पुनी इनकम देखिबा तापर देखिबा प्रथम इनकम अपेक्षा सेकंड इनकम इंक्रीज होउची कि डिक्रीज होउची सेटा कैलकुलेशन करबा आउ भी सेही हम गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करथिले जे इफ दैट इज द टैक्स इज गिवन
तापर तुम टैक्स कैलकुलेशन करबो टैक्स टा माइनस कर देले हमर आसी जीवो नेट एनुअल इनकम तेणु ये आम ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर सारे तापर आउ गोटे सॉल्व कले आम कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट कैश वैल्यू आज जोड़ा आम प्रॉब्लम सॉल्व कले सेमती इन्वेस्टमेंट ऑफ ए गिवन कैपिटल इनटू डिफरेंट स्टॉक्स गोटे टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक अच्छी आम से किसी पोर्शन एटी स्टॉक गोटे प्रकार स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करछे आउ गोटे प्रकार स्टॉक रे अलग तुम बाकी तक आम तेणु आइदर तुम दीटांकर इनकम सामान देइथिबो किंबा दीटांकर इनकम मिसिक एति टंका देइथिबो किंबा प्रथम इनकम सेकंड इनकम अपेक्षा एति टंका अधिक देइथिबो कि कम देइथिबो देइथिला हम इक्वेशन पके करी x रा वैल्यू हम बाहर करिबा सो these are the some problems on the investment of a given capital into and that is into different stock then the our com dividend our x dividend तेणु कम डिविडेंड प्राइस कोटेशन एथरे हम कोन करथिले ना गोटे एक्यूरेट डिविडेंड कैलकुलेशन करथिले सो एक्यूरेट डिविडेंड शुड बी दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस so we have already that is problem solved these problems so this is the completion of the chapter stock and share तेणु आमर जो 8 पोर्शन अच्छी आमर रिवाइज कोर्स रे आमर कंप्लीट हैला या पर तुमरा स्टैटिस्टिक्स अच्छी तुमरा स्टार्ट हो definition of statistics like this so today we complete that chapter